Hello children, today we are going to learn maths with fun. So are you ready to count with me numbers from 1 to 20? बच्चों, आज हम नंबर्स 1 से लेके 20 तक काउंट करेंगे। आप रेडी हो? तो चले। Children, you have to repeat the numbers after me. बच्चों, आप ये नंबर्स मेरे बाद रिपीट कीजिए। 1 ONE 1 2 TWO 2 3 THREE 3 4 FOUR 4 5 FIVE 5 6 SIX 6 7 SEVEN 7 8 EIGHT 8 9 NINE 9 10 TEN 10. Now next number is 11. It's 11 11 ELEVEN 11 12 TWELVE 12 13 THIRTEEN 13 14 FOURTEEN 14 15 FIFTEEN 15 16 SIXTEEN 16 SIXTEEN 16 17 SEVENTEEN 17 18 EIGHTEEN 18 19 NINETEEN 19 20 TWENTY 20. These are the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and these are the number names of the numbers. ONE 1 TWO 2 3 THREE 3. So these are the number names. Again these are the numbers 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, and these are the number names of these numbers. So did you understand how we say the numbers? We say the numbers in a proper line. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, we don't say it as 1 5 6 7. We never say that. Okay, we never repeat that 5 3 1 9 10. Okay, we always say the numbers in line. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. बच्चों, जब हम नंबर्स बोलते हैं तो हम हमेशा उन्हें एक लाइन में बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कभी आप ऐसे बोलते हो 1 5 9 3 2. हम ऊपर नीचे नंबर्स नहीं बोलते हैं, हम हमेशा नंबर्स लाइन में बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, और फिर उसके बाद आता है 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20. तो अभी आप ये नंबर नेम्स देखोगे तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है. 2 है TWO,
कितने बार ऐसे होता है बच्चे लिखते वक्त TOW लिखते हैं? क्या लिखते हैं? TOW, वो रॉन्ग है। तो करेक्ट स्पेलिंग क्या है टू का? TWO। चिल्ड्रन, मेनी टाइम्स you write 2 as TOW, which is wrong. The correct spelling of 2 is TWO. So please learn these spellings because they are very useful for you. Now ONE1, और this is 11, ये क्या है? 11 है, तो इसे 11 नहीं बोलते, इसे क्या बोलते हैं हम? 11, ELEVEN, 11। then this is 2 and 12, TWELVE, 12। you have to learn the spellings because they are very useful। 3, THREE, 3, 13, THIRTEEN, 13। Now if you see in this spelling 13, this tin, TEEN, tin, this is repeated for the numbers till 19. So if you learn this TEEN, it will be common for all the numbers till 19. So you don't have to learn again and again this tin. Only thing, first letters you have to learn. Like for 3 it becomes 13. So you have to learn THIR, 13. Then once you know 3, then you have to learn THIR, 13. Teen already you know TEEN. So you have to learn for 13 THIR. Then it is 4 and here it is 14. So you already know 4. So it becomes 14. 5, again your 15 changes. Here it is 5. Here it becomes FIF. Here it is FIVE. For 15 it becomes FIF. So this 3 letters you have to remember, and tin is common. TEEN, tin. This is 6. SIX, 6. So here again 6 and tin. 16. 7. Then 17. 8. Then 18. Okay. Here see, double T is not there, only single T is there, and then double EN, 18. So you have to remember the spelling for 8, then 18 becomes very easy for you. Then 9, 19, 10, TEN, 10. Here it becomes 20, TWENTY, 20. So did you understand how to learn the spellings? Can we move ahead? पिज़्ज़ास, आई नो यू ऑल लाइक पिज़्ज़ास। बच्चों, आपको पिज़्ज़ा पसंद है ना? तो चलो आज हम पिज़्ज़ा काउंट करते हैं। चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट काउंटिंग दिस पिज़्ज़ास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So how many pizzas are there? 7. How many pizzas are there? 7 pizzas are there. Now we'll move to second slide. This is carrots. How many carrots are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 carrots. Now we'll move to next slide. This is apples. So children, count with me. बच्चों मेरे साथ count कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So there are how many apples? 10. So children, when you count the numbers in line, you get the correct counting of the things. Okay, I also did the same. I started counting from number 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So I got the count as 10. Now the homework for you is you must be having some apples or potatoes or tomatoes in your house. So you are going to count the number of things after this session.
बच्चों, आपके घर में आपके मम्मी ने शायद कुछ टमाटर या आलू लाकर रखे होंगे, तो आपको वो काउंट करने हैं और आपके नोटबुक में लिखना है। ये आपका होमवर्क है। ओ, यहाँ पे तो कोई भी चीज नहीं है। जब कोई भी चीज नहीं होती है तो क्या नंबर आता है? जीरो। क्या होता है? जीरो। ZERO। जीरो यानी कुछ भी नहीं। अगर आपके पास एक भी पेंसिल नहीं है तो आपके पास कितने पेंसिल है? जीरो पेंसिल है, यानी आपके पास कुछ भी पेंसिल नहीं है। Children, if you don't have any things with you, for example, if you don't have any pencils with you, that means you have zero pencils. Zero comes for nothing. Okay, there is nothing with you, no thing. So it is called as zero. The numbers always starts from zero. Zero is nothing. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So this way we are going to count the numbers. Okay, we can't do the counting as 5, 3, 1. Will we get the correct counting? No. So always when we want to count, we have to count in a line. 1, 2, 3, 4, 5. बच्चों, आप जब काउंटिंग करते हो तो आप बीच में से काउंटिंग नहीं करोगे, यानी 3, 2, 5, 4, तो आपको रॉन्ग नंबर आएंगे, रॉन्ग काउंटिंग आएगा। तो हमेशा जब आप कोई भी चीज काउंट करते हो तो आपको हमेशा लाइन से नंबर बोलने होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरह से आप काउंटिंग करते हो। तो आज के लिए इतना ही काफी है। बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय चिल्ड्रन।